Okay, so what if I tell you the life you're dreaming for 2026 for any other sometime does already exist? It just you haven't claimed it yet. Hey you guys, welcome and welcome back to my channel. And today we are going to do something that we haven't done before earlier, neither on my personal life nor I have made such kind of video also. आपको description से already पता चल गया होगा. So today we are making my first vision board for 2026. Yeah, so it will not be very Pinteresty, okay, neither perfect nor it will be only aesthetic जो आप usually आप देखते हो, but in fact it will be very real and emotional and slightly delusional. Okay, but yeah, any which ways we are gonna do it. So grab a coffee, sit with me and let's manifest together. आज ना मैंने अच्छा खासा प्रिपरेशन कर लिया है, ठीक है. Since it is about a vision board and there are so many details जो मुझे शेयर करना है आपके साथ. So yeah, आज जैसे I have my notes in this phone and not only this, मैंने अपने नोट्स इस डायरी में भी लिखा हुआ है कुछ बहुत हद तक, जो कि मैंने पहले ऐसा इतना प्रिपरेशन नहीं किया, बट सो यू कैन से इट राइट नाउ. एंड अबव ऑल आई हैव माई विजन बोर्ड विथ मी राइट नाउ. एंड ट्रस्ट मी, मुझे इतना मज़ा आया ना बना के, इतना अच्छा लगा ना मुझे. मतलब इट फील्स लाइक कि आप ये मोमेंट जी रहे होते हो, राइट. व्हेन यू डू इट ऑन अ प्रॉपर, आप जब काट वाट करके आप अच्छे से पेस्ट वेस्ट करते हो एंड यू नो कि कहाँ कौन सी पिक्चर्स आपको अलाइन करनी है. So like you're living that moment. First thing first, let's start why I decided to make a vision board. Okay, so honestly saying, पहले मुझे ऐसा लगता था ना कि vision board is like a very Pinteresty, beautiful pictures people used to download from Pinterest and then they hang it over there. So something like that. मुझे ऐसा literally मुझे ऐसा बहुत लगता था. It's nothing real, something like that. But 2025 taught me something very important. Like clarity creates the consistency, which is very important, and direction creates the discipline, which is also very important because both goes hand in hand. So I was really working very hard, but not always towards something very specific, if I can say so. Yeah, it's very awkward for me also to accept the fact, but yeah, it is what it is. उसके बाद जब मैं ये सोची थी ना कि मुझे नेक्स्ट ईयर बहुत आई नीड टू रियली वर्क हार्ड, आई नीड टू डू दिस एंड दैट, then I was like, what means, what is the specific you want? So there was not much clarity. सही बताऊँ, मुझे इतनी clarity नहीं आ रही थी. There was only 2-3 points जो मेरे दिमाग में आ रहे थे, बस that's it. But that's when I decided like 2026 needs a vision board. So here we are. So that's how I ended up making a vision board. वैसे ये वीडियो ना मुझे बहुत पहले बनाना था, बट सिंस मैं अपने होम टाउन पे हूँ एंड फिर वो क्रिसमस आ गया, उसके बाद फिर वो लॉन्ग छुट्टियाँ हो गई एंड समथिंग और अदर कुछ ना कुछ था. सो या, टुडे इज 29 December and we are making it. So I'm really very excited, guys. I don't know, I'm really very excited. So for me, vision board is not about manifesting something without any effort. It's more like choosing discipline over comfort, which is at most important because yeah, some days you have second thought about creating videos or a posting reel or anything. Yeah, and reminding myself like what I'm building, because some days I feel very lost. I don't want, I feel like what I'm doing and where it is and where I'm going. So yeah, so that is the day where it will help you a lot. So basically it's like a visual reminder of a girl I am becoming. ओके, जो मैंने विजन बोर्ड बनाया है, इट टुक मी रियली सम टाइम टू थिंक कि क्या मैं इंक्लूड करूँ. सो बेसिकली आई हैव डिवाइडेड इनटू 4 to 5 सेक्शन. ज़्यादा ना, मतलब काफ़ी ज़्यादा हो जाता, विच वॉज नॉट नीडेड बेसिकली. So let's start. Okay, the first one is the career growth. Okay, then second goes with the personal growth, like fitness or something like that. Third with the family oriented family goal. Then the fourth follows with the lifestyle and the way you want to live. Fifth with the financial one. So yeah, that's how I have divided it, and that's how I have put this all together in this one frame, and it's looking very amazing. Okay, so yeah, okay, let's start with the biggest part of my life, that is the career goal. Okay, and starting with the content creation. Okay, so I just wanted to be very consistent on YouTube and on Insta and on Facebook, basically on social media. Okay, so that is more important. This year मेरा यही motive रहेगा. I just want to be known as a fashion with personality. Okay, and that's how I ended up putting some career related pictures here. एंड यू नो वॉट, ये साल ना मुझे व्यूज़ पे ज़्यादा मैं फोकस नहीं कर रही हूँ. आई जस्ट रियली वॉन्ट टू बिल्ड माई कम्युनिटी. आई रियली वॉन्ट माई पीपल टू बी टुगेदर विथ मी एंड सो दैट वी कैन ग्रो टुगेदर. सो नेक्स्ट गोज विद दी पर्सनल फिटनेस, समथिंग लाइक दैट. सो अर्लियर क्या था ना कि मैं पहले जिम ज्वाइन की थी, ठीक है. Okay, but I don't know, somehow other I just dropped it because I changed my flat and यहाँ पे फिर मैंने ऐसा कुछ फिर मैंने rejoin किया नहीं. So that is my second and most important, because everything starts with yourself. If you're happy, if you're healthy, if you're fit, then you will be able to do whatever you want. So yeah, so I just have my goal कि मैं इस बार consistent रहूँ अपने या gym पे और pilates और yoga, whatever I want to do. I just want to be very consistent on that. Moving towards the third one, it's lifestyle and all that. So I really want to live a very lavish life and I claim it, and I am not feeling very shy to accept the fact, because I really want to live that life.
So yeah, so in lifestyle I have certain goal. Okay, what like what you want, which brand you want to take, or where you want to travel, and in which business class, since I really want to travel in a business class. Okay, so yeah, so there are certain things, I don't know, right now I'm feeling shy to tell you each and everything, but yeah, but yes, दिस इज़ अ थिंग यार, मतलब मुझे सच में मुझे मन है कि मैं काफ़ी लैविश लाइफ रहूँ। आई रियली वांट टू ओन माय कार, ओके दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। आई रियली वांट टू ओन माय कार, दो आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव, बट स्टिल आई विल लर्न इट। सो या, आई रियली वांट some a very good brand, like I really want YSL. I really want one international trip to happen this year. Oh God, you have no idea how much I really want to travel to Seoul. मतलब मुझे इतना मन है ना, इतना मन है, बट somehow other कुछ चीज़ें वर्कआउट नहीं हो पा रही है। बट या, बट स्टिल, जैसे मैंने कभी भी इंटरनेशनल ट्रिप नहीं किया है, तो मुझे सच में मन है कि मैं इंटरनेशनल ट्रिप करूँ, एंड दैट इज़ ऑल्सो स्पॉन्सर्ड इंटरनेशनल ट्रिप। या आई नो दैट इज टू मच टू आस्क, बट स्टिल लाइक व्हाई नॉट, बीइंग स्लाइटली डिल्यूशनल विल नॉट गोना हार्म एनीवन। सो या, अब चाहे मैं पे करूँ या स्पॉन्सर्ड हो, बट आई रियली वांट टू ट्रैवल दिस ईयर। आई जस्ट रियली वांट टू हैव वन इंटरनेशनल ट्रिप, एंड I don't know. There are certain there are certain places on my list. That is Seoul, that is Japan, that is China, that is LA. Yeah, so Amsterdam's. So yeah, there are certain places which I want to go initially, but let's see what happens next. Okay, so next is family. So in family, everyone is very much settled. Okay, they are very happy in their own zone, and I'm really very grateful and thankful for that. But there are certain things कुछ है जो मुझे मैं literally मैं बहुत manifest कर रही हूँ, and I'm praying very hard to get it done, 2026, and yeah, I don't know, let's keep finger crossed what happens. So yeah, okay, so now last would be the financial goal. तो financial goal is like किसे नहीं पैसे चाहिए यार, किसे नहीं, मतलब वो एक एक लेवल चाहिए जहाँ पे वो जो चाहे वो कर सके। ओके, मेरे पास बैंक बैलेंस है एंड आई अट्रैक्ट मनी, सो इसमें हार्म क्या है? लाइक इफ आई वांट टू ट्रैवल एंड आई हैव मनी, तो ऑब्वियसली आई विल गो। इफ आई वांट टू बाय समथिंग फॉर माय फैमिली एंड आई हैव दैट मच मनी, देन ऑब्वियसली आई विल डू दैट। सो किसे पैसे नहीं पसंद है ये बताओ? So yeah, that is a thing. Like I would just want to be, though I am very thankful and grateful, I am very much settled and happy in my current zone. Very important for each and everyone to be financial very independent. Okay, and मैंने ना कुछ बाउंड्री वगैरह सेट किया हुआ है, लाइक इन यूट्यूब ऑल्सो आई वॉन्ट टू हैव सर्टन नंबर्स। ओके, आई एम नॉट गोना मेंशन इट राइट नाउ, बट हाँ, आई रियली वॉन्ट टू हैव सर्टन सब्सक्राइबर। एंड इन इंस्टा ऑल्सो मैंने सेट किया हुआ है कि मुझे इतने फॉलोअर्स चाहिए बाय द एंड ऑफ 2026। Okay, so that's how you claim it, and that's how you work towards it. So, and now when I look at this board, I really don't feel a very pressure. In fact, I'm very excited, very focused, and very much hopeful. It really reminds me that every small action today is shaping my 2026. And you know what, I just want to keep my vision board as my phone wallpaper also, because growth is not rigid, yeah, it's very flexible. So yeah, I think I have covered my all points. Actually मैं ना ये भूल जाती, तो इसलिए मैंने अच्छे से पेन डाउन किया हुआ था, so that I should cover each and every detail, and I should share each and every detail, like why I thought and what does it mean to me, and किस वे में मैंने इसे मतलब बनाया हुआ है सोच के। सो या, एंड वॉट ऑल आर माई विजन। सो बेसिकली मैंने बहुत चीज़ आपके साथ शेयर कर दी है पर्सनली, जो कि मैंने यहाँ पे पुट ऑन किया हुआ है। इन फैक्ट आई एम टेलिंग यू, इफ़ यू आर थिंकिंग कि वॉट टू स्टार्ट फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, देन दिस इज़ योर साइन टू स्टार्ट। नाउ आई एम डेफिनेटली टेलिंग यू कि ये बिल्कुल भी बिग डील नहीं है, जो कि मुझे पहले बहुत लग रहा था। मुझे लग रहा था कि भाई ये मेरे लिए बोझ है, मैं ये कैसे बनाऊँ, मतलब लोग कैसे कर लेते हैं। पर मुझे लग रहा है अब क्या है, मतलब इट्स ओके, इट्स फाइन, अ लिटिल बिट ऑफ कॉन्फिडेंस, एंड देयर यू गो। एंड यू डोंट नीड एनी फैंसी टूल्स और समथिंग लाइक दैट, यू जस्ट नीड सम क्लैरिटी एंड करेज। सो yeah, so again I'm telling you, if you're totally blank कि कहाँ से क्या start करे, कब करे, कैसे करे, so this is your sign to start, and please do it यार, मतलब it's really helpful। इसमें आपका कुछ harm नहीं हो रहा है, अगर कुछ अच्छा हो जाता तो फिर क्या है, मतलब it's a win-win situation। That's it, and yeah, I am done with it, and I'm really very happy, and I'm gonna keep it, and इस पे हम discuss करेंगे maybe most probably next year। And so yeah, if you've watched till the end, then thank you so much for watching, and don't forget to like, share, subscribe to my channel, and comment में mention कर दो, बता दो, like at least one goal what you're having, since I have shared with you my all the segments, so at least आप अपना एक बता दो in the comment section, like what you're expecting or what you want in 2026, and catch up in the comment section below. So yeah, thank you so much for watching, don't forget to subscribe, and again I will say भाई अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, बॉयज़ गैंग, गर्ल्स गैंग सब में शेयर करो, एंड सी यू नेक्स्ट। बाय।